Hello everyone, welcome back to this video on preparation of alcohols. Okay, so इस वीडियो में हम पढ़ेंगे preparation of alcohol using certain set of chemical reactions. कुछ है substitution reactions, कुछ है addition reactions, metal catalyzed reactions, reactions involving metals. Okay, so this section of preparation is practically very easy. Okay, तो आप लोगों को ये section काफी easy लगेगा और काफी scoring भी है, तो कोई problem नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रिपरेशन पार्ट 1. ओके, प्रिपरेशन के इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द वीडियो एज वेल एज द टाइप ऑफ रिएक्शन. तो ये जो पहला पार्ट है दैट इज प्योरली अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, right? Second part is going to be for addition reaction. Third part is basically reduction and the Grignard reactions. Okay, चलिए देखते हैं one by one the different set of reactions. Okay, तो सबसे पहले है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. वी ऑलरेडी नो व्हाट इज अ सब्स्टिट्यूट, व्हाट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मेरे पास है ए बी, राइट, जो भी है रिएक्टेंट, और ये है एक्स जो कि है रिएजेंट, करेक्ट, जो कि हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कुछ भी. तो आई कैन हैव ए एक्स प्लस बी. मैं बेसिकली पोलैरिटी नहीं डाल रहा हूं बिकॉज एक्स कैन बी प्लस, एक्स कैन बी माइनस, सो आई एम नॉट जनरलाइजिंग एनीथिंग एट ऑल. ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, द एक्शन ऑफ एक्वेस एल्कली, राइट. तो एक्वेस एल्कली का मतलब है इट कैन बी एक्वेयस NaOH जिसको हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, राइट, एंड देन यू कैन हैव एक्वेयस KOH पोटैश, राइट. सो ये दोनों रिएजेंट्स दे आर बेसिकली गोइंग टू वर्क इन द सेम वे. ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्वेस एल्कली से. लेट्स डू द जनरल रिएक्शन फर्स्ट. तो मेरे पास है एक अल्काइल हैलाइड, राइट, और मैं उसको ट्रीट करता हूं NaOH से. ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्वेयस NaOH. तो वैसे भी आपको पता है रिगार्डिंग द पोलैरिटी एंड एवरीथिंग. सो ये हमने सेक्शन ऑन हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन्स में पढ़ा है. सो दिस इज पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियल पॉजिटिव. NaOH में Na है प्लस और OH है माइनस, राइट. सो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, OH माइनस अटैक करेगा R को और X निकल जाएगा. सो दिस कैन बी ईदर वाया SN1 और SN2, राइट. तो व्हाट डू यू गेट ओवर हियर? You get over here is basically ROH plus NaX. So this is nothing but the alcohol, right? You already know कि SN1 reaction favor होते हैं using tertiary alkyl halide or resonance stabilized primary alkyl halide, SN1, right? And then so I'll write here SN itself. Okay, तो SN में 3 degrees for SN1. Okay, and then I'll write here SN2 का क्या होगा? SN2 is normally given by 1 degree alkyl halide और मिथाइल हैलाइड, राइट. तो आई होप ऑलरेडी आपने देख लिया होगा रिगार्डिंग द सेक्शन ऑन एलिमिनेशन रिएक्शंस व्हिच इज टेलीकास्टेड इन माय private channel chemistry at your fingertips. Okay, so guys, I have not put those videos as a part of this course. The reason is they are specifically meant for the higher levels of JEE preparation, specifically the ones who are literally targeting for the maximum score, like out of scores, or you can say JEE advanced. So you can just refer to the channel and just search for E1 E2 elimination reactions. Okay, तो अब हम देखते हैं एक specific representative examples. So I will take C2H5, okay, C2H5I, right, which is a primary alkyl halide, और मैं इसको treat करूंगा using NaOH. Obviously the medium has to be aqueous, correct, and then you have to boil strongly, obviously. तो अब मैं यहाँ पे directly लिख देता हूँ. What do I get over here? This is C2H5OH plus NaI, right, ethanol plus NaI, राइट. और ये रिएक्शन है बेसिकली SN2 मैकेनिज्म वाला, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, राइट. सो आई राइट हियर दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, correct. So this is nothing but reaction of aqueous alkali. Again, one very important piece of information, one very important thing, अगर aqueous के जगह पर आपने alcoholic लिख दिया
तो होगा dehydrohalogenation. So something which is very very important to write, and अगर आपने लिखा नहीं तो आपके मार्क्स जा सकते हैं. That is basically this term aqueous, right? अगर आपने aqueous नहीं लिखा then there will be a deduction of marks if this question is going to be asked. You may not get any marks at all. That's basically the thing. If it is of like 2 marks, they may deduct like 1 mark just for not writing aqueous. So you have to be very very careful. So just I'm going to put a star over here. Correct? So this was about the aqueous alkali. Now here is an assignment question for you. So I'll just give you assignment question. How are you going to prepare this alcohol? Okay, how are you going to prepare this alcohol? This is, I'm going to write here CH2OH, right? How are you going to prepare this benzyl alcohol, and what is the mechanism? Okay, I'll just give you the clue. This benzyl alcohol can be prepared by this reaction as it is known, but it is a resonance stabilized one. So kaun sa mechanism hoga, right? So the mechanism for this particular thing is going to be SN1. ओके और आप इसमें बेसिकली वीक बेस यूज करेंगे, राइट? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaOH यू कैन यूज, और यहाँ पे बेंजाइल आयोडाइड से आप रिएक्शन शुरू करेंगे. सो दिस इज जस्ट एन असाइनमेंट क्वेश्चन, यू हैव टू वर्क इट आउट ऑन योर ओन. ओके, नाउ the next one is using moist silver oxide. Okay, what is moist silver oxide? Now I'll write here silver oxide is Ag2O. Okay, so this is in general the silver oxide. What do you mean by moist? Moist का मतलब है interaction with water, right? तो मैं सबसे पहले लिखूंगा moist silver oxide का reaction. तो you have Ag2O plus H2O, right? तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 2 Ag. Okay, तो मेरे पास है Ag and then there is one O, there is one H. Can you see सबके सब 2 है, तो I'm going to write this as 2. So what is moist silver oxide? Look at the screen. It's basically silver oxide suspended in water. Okay, it is silver oxide suspended in water, right? So अब देखते हैं reaction कैसे होगा. So you have an alkyl halide, right? This alkyl halide is treated with AgOH, लेकिन AgOH हमें directly नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे? Arrow के ऊपर लिखेंगे this is nothing but obtained from moist silver oxide, right? So this is something that you need to know. Okay, and then what do we get over here? Again the same thing is going to happen over here. Reaction बहुत ही simple है. So you have ROH coming into picture. Okay, so you have ROH plus AgX. ठीक है. Now the next is I'm going to use maybe ethyl iodide. Ethyl iodide को मैं treat करूंगा using this AgOH with AgOH. Under the same conditions I'm just going to put this symbol, and then what do I get over here is C2H5OH, that is ethanol plus AgI, right? काफी easy है ये reaction. ठीक है, तो ये हो गया preparation of ethanol. Now what will happen if it is not moist? That means मैं basically use करूंगा dry Ag2O. Right now this is very very important from the entrance exam point of view. So I'm just highlighting this. Please mark this. Okay, this reaction अगर आप separately notes बना रहे हैं, so this is basically for JEE, both mains and advanced, and then this is for NEET, and this is even for MHT CT. Okay, ये तीनों में इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक. सो अगर मैं ये यूज करूंगा RX, राइट, और ड्राई सिल्वर ऑक्साइड मतलब ऐसे के ऐसे ही, सो Ag2O इज देयर, राइट? सो I'll use one more, so I'll write here XR, correct? So this is basically dry. So you know what will happen? This X and this X will go with 2Ag and you get 2AgX. Okay, and then basically what is that which you get over here? You get ROR, which is nothing but an ether. Okay, very simple this is. So you have to understand that RX on treatment with moist Ag2O. Okay, moist Ag2O से reaction क्या होता है? Moist Ag2O से आपको मिलेगा, I'll write here ROH. Right, let me make it neat. Okay, so I'm just going to write here R, and then अगर मैं use करूंगा dry Ag2O,
Okay, so what do I get? I get an ether which is ROR. Okay, so please make a note of this particular JE or NEET as well as CET level question. Okay, so this was about very simple substitution reactions. Okay, अब हम next set of reactions जो पढ़ेंगे वो होगा that's going to be the part of next video. Okay, so see you again. Thank you.